जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 12 व 13। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्तत्त्वामृष्यः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास, ये चारों ही भगवान के यथार्थ तत्व के जानने वाले, उनके महान प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महान सत्यवादी महर्षि हैं। ऐसे आप्त पुरुषों की वाणी सर्वदा माननीय है, उसमें क्या और क्यों की गुंजाइश नहीं। और हे भगवान, आप स्वयं भी मेरे प्रति यही कहते हैं। ऋषियों, वेदों और शास्त्रों के वचन हम सुनते हैं कि ब्रह्म निर्मल महाकाश स्वरूप है। भगवत अनुग्रह से साधक उनको स्वयं प्रत्यक्ष करता है। अपने अनुभव शास्त्र द्वारा समर्थित होने पर साधक की बुद्धि साधना में और भी दृढ़ीभूत होती है और उसे निरंतर आत्मिक आनंद प्राप्त होता रहता है। Thou art the supreme Brahman, the supreme abode, the supreme light, the supreme purifier, eternal, divine person, the primeval God, unborn and omnipresent. All the sages have thus declared thee, as also the divine sage Narada, so also Asita, Devala and Vyasa. And now thou thyself sayest so to me. The words of such divine sages must be believed without any doubt. The eternal joy of an aspirant when his spiritual experiences are collaborated by Shastras knows no bounds. He is well established in firm faith and becomes steadfast in his knowledge and practice. Om. గీతాసుధ అధ్యాయము 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 12 మరియు 13. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యమాది దేవమజం విభుం ఆహుస్త్వం ఉషే సర్వే దేవర్షి నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాస స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. ఈ విధముగా భగవాన్ వచనములు విని అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు, ఏ భగవాన్, మీరు పరబ్రహ్మ, పరమధామము మరియు పరమ పవిత్రమైన వారు. ఎందుకంటే మిమ్ము సమస్త ఋషిగణము సనాతనుడు, దివ్య పురుషుడు మరియు దేవాదేవుడు, అజన్ముడు మరియు సర్వవ్యాపి అని అంటారు. అదేవిధంగా దేవర్షి నారదుడు, అసితుడు, దేవుడు మరియు వ్యాసుడు కూడా చెప్తారు. దేవర్షి నారదుడు, అసితుడు, దేవుడు మరియు వ్యాసుడు, ఈ నలుగురు భగవానుని యథార్థ జ్ఞానాన్ని తత్వం ద్వారా ఎరిగిన వారు. వీరు ఆ భగవానుని గొప్ప ప్రేమ భక్తులు మరియు పరమజ్ఞానులు, గొప్ప సత్యవాదులైన మహర్షులు. ఇటువంటి ఆప్త పురుషుల వాక్కు సర్వదా గౌరవింపదగినది. దాని యందు ఏమిటి మరియు ఎందుకు అనే వాటికి స్థానం లేదు. మరియు హే భగవాన్,
స్వయంగా మీరు కూడా నాకు ఇదే చెబుతారు. ఋషులు, వేదాలు మరియు శాస్త్రాల విషయములను మనం వింటూ ఉంటాము. ఏమనంటే బ్రహ్మ నిర్మల మహాకాశ స్వరూపమని, భగవాన్ని అనుగ్రహంతో సాధకుడు ఆయన్ను స్వయంగా ప్రత్యక్షం చేసుకుంటాడు. తన అనుభవం శాస్త్రం ద్వారా సమర్థించబడినప్పుడు సాధకుని బుద్ధి సాధనలో మరింత దృఢతరం అవుతుంది. దాంతో అతనికి నిరంతరము ఆత్మిక ఆనందం లభిస్తూ ఉంటుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై శరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 10, श्लोक 12 आणि 13. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमभवन पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमंजन विभुवम्. अशा प्रकारे भगवंताचे वचन ऐकून अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, तू परब्रह्म आहेस, परम निवासस्थान आहेस आणि परम शुद्ध आहेस. कारण तुला आदिदेव म्हणतात. सर्व ऋषींमध्ये अजन्मा आणि सर्वव्यापी आहेत. शाश्वत दिव्य पुरुष आणि देव, त्याचप्रमाणे ऋषी नारद आणि असित आणि देवल आणि महर्षी व्यास देखील म्हणतात. देवर्षी नारद, असित, देवल आणि व्यास हे चौघेही ईश्वराचे खरे रूप जाणणारे, त्याचे महान प्रेमशील भक्त आणि परमज्ञानी सत्यवादी ऋषी आहेत. अशा प्रबुद्ध पुरुषांच्या शब्दांचा नेहमीच आदर केला जातो. त्यांच्या शब्दामध्ये काय किंवा का याला जागा नसते. आणि हे भगवान, तुम्ही स्वतःही मला तेच सांगता. आपण ऋषी, वेद आणि शास्त्रांचे शब्द ऐकतो की ब्रह्म हे विशाल अवकाशाचे शुद्ध स्वरूप आहे. ईश्वराच्या कृपेने साधक स्वतः त्याचा अनुभव घेतो. जेव्हा त्याच्या अनुभवांना शास्त्राचा आधार मिळतो, तेव्हा साधकाची बुद्धी त्याच्या आध्यात्मिक साधनेत अधिक प्रबळ होते आणि तो आध्यात्मिक आनंदाचा अनुभव घेत राहतो. तुम्हीच परब्रह्म, परम निवासस्थान, परम प्रकाश, परम पवित्र करणारे शाश्वत दिव्य पुरुष, आद्य ईश्वर, अजन्मा आणि सर्वव्यापी आहात. सर्व ऋषींनी तसेच दिव्य ऋषी नारद, असित, देवल आणि व्यास यांनीही असेच घोषित केलेले आहे. आणि आता तू स्वतः मला असे सांगत आहेस. अशा दिव्य ऋषींच्या शब्दावर कोणत्याही शंकेशिवाय विश्वास ठेवला पाहिजे. जेव्हा साधकाच्या आध्यात्मिक अनुभवांना शास्त्राची जोड मिळते, तेव्हा त्याला मिळणाऱ्या शाश्वत आनंदाला सीमा राहत नाही. त्याची श्रद्धा दृढ होते आणि तो आपल्या ज्ञानात आणि साधनेमध्ये स्थिर होतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 14. സർവമേതദൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹി ദേ ഭഗവാൻ വ്യക്തിം പിതൃദേവാനദാനവ. ഹേ കേശവ, അങ്ങ് എന്നോട് പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ പരമസത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹേ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ദിവ്യരൂപത്തെയും മഹിമയെയും ദേവന്മാർക്കും ദാനവന്മാർക്കും പൂർണ്ണമായി അറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയ്ക്കായും ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിനായും ഭക്തരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനായും ദേവന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹത്തിനുമായി അനേകം ദിവ്യലീലാ സ്വരൂപങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു. ആ ലീലാസ്വരൂപങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മഹിമയും അവയുടെ രഹസ്യവും ദേവന്മാർക്കും ദാനവന്മാർക്കും പോലും പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാനാവുന്നില്ല. പിന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഹേ പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വചനരൂപമായ ജ്ഞാനകിരണങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മഹർഷിമാർ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പുണ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഹേ സദ്ഗുരുദേവ, അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകുന്ന ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമായി. മഹർഷിമാർ മുഖേന
അങ്ങയുടെ മഹിമ ഞാൻ പലവട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ കൃപ ലഭിക്കുന്നത് വരെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഏത് ശ്രമവും വിജയകരമാകുന്നത് പോലെ കേട്ടതും പഠിച്ചതുമായ ജ്ഞാനവും ഗുരുകൃപയാൽ മാത്രമേ ഫലപ്രദമാകൂ. ശാസ്ത്ര പഠനമോ യോഗാഭ്യാസമോ എന്തു തന്നെയായാലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം ലഭിക്കുന്നത് സദ്ഗുരുവിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ഹേ പരമ സദ്ഗുരുദേവ, അങ്ങയുടെ ഉപദേശവും കൃപയുമില്ലാതെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയുടെ ബലത്തിൽ മാത്രം ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അവസാനം നിരാശരാകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമായി. ആത്മാവിനെ യഥാർത്ഥ അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയുന്നത് ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. മറ്റാർക്കും അതിനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാനുള്ള കഴിവില്ല. അതിന്റെ പൂർണ്ണ അനുഭവം ഈശ്വരകൃപയിലൂടെയും സദ്ഗുരു ഉപദേശത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ്. അഹങ്കാരത്തെയും ബുദ്ധിഗർവത്തെയും വിട്ട് വിനയത്തോടെ ഗുരുവിനെയും ഭഗവാനെയും ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അറിവ് അനുഭവമായി മാറുകയും ആത്മസത്യം വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। ऐ प्रकार भगवान के वचन सुनिकर अर्जुन कहलखिन, हे भगवान, अहाँ परम ब्रह्म छी, परम धाम छी आ परम पवित्र छी। क्या त समस्त ऋषिगण अहाँ के सनातन दिव्य पुरुष, देव सब के आदिदेव, अजन्मल आ सर्वव्यापी कहैत छथि। देवर्षि नारद, असित, देवल आ महर्षि व्यास सेहो अहाँक विषय में यह कहैत छथि। देवर्षि नारद, असित, देवल आ व्यास ई चारू महर्षि भगवान के यथार्थ तत्व के जानय वाला, हुनकर महान प्रेमी भक्त, परम ज्ञानी आ सत्यवादी छथि। एहन आप्त पुरुष सबके वाणी सदा माननीय होइत अछि। ओहिमे की आ कियाक केर कोनो स्थान नहि रहैत अछि। आ हे भगवान, अहाँ अपनो हमरा यह कहैत छी। ऋषि, वेद आ शास्त्र सबके वचन सँ हम सुनैत छी जे ब्रह्म निर्मल महाकाश स्वरूप छथि। भगवत के अनुग्रह सँ साधक हुनका स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करैत छथि। जखन साधक के आत्मानुभव शास्त्र के प्रमाण सँ समर्थित भ जाइत अछि, तखन हुनकर बुद्धि साधना में आरो दृढ़ भ जाइत अछि आ हुनका सदा आत्मिक आनंद के अनुभूति होइत छनि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।